Hello everyone, my name is Mamta शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आज हम यूजीसी नेट के पेपर 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे. आओ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड. इसमें है टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, characteristics and basic requirements of teaching, learners characteristics of adolescent and adult learners, academic, social, emotional and cognitive individual differences, factors affecting teaching related to teacher, learner, support material, instructional facilities, learning environment and institution. Methods of teaching in institutions of higher learning, teacher-centered versus learner-centered methods, offline versus online methods, Swayambarbha, MOOCs, etc. Teaching support system, traditional, modern and ICT based. Evaluation system, elements and types of evaluation. Evaluation in choice-based credit system in higher education. Computer-based testing, innovations in evaluation systems. Unit 2, research aptitude. Research meaning, types, characteristics, positivism and post-positivistic approach to research. Methods of research: experimental, descriptive, historical, qualitative and quantitative methods. Steps of research: thesis and article writing, format and styles of referencing, application of ICT in research, research ethics. Unit 3 है comprehension. A passage of text be given, questions be asked from the passage to be answered. इसमें यूजीसी के द्वारा एक कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है जिसमें से क्वेश्चन चूज करने होते हैं. यूनिट 4 है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्लासरूम कम्युनिकेशंस. फिर है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी. यूनिट 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. टाइप्स ऑफ रीजनिंग, number series, letter series, codes and relationships. Mathematical aptitude, fraction, time and distance, ratio, proportion and percentage, profit and loss, interest and discounting average, etc. Unit 6, logical reasoning. Understanding the structure of arguments, argument forms, structure of categorical prepositions, mood and figure, formal and informal fallacies, usage of language, connotations and denotations of terms, classical square of opposition. Evaluating and distinguishing deductive and inductive reasoning, analogies, Venn diagram, simple and multiple use for establishing validity of arguments, Indian logic, means of knowledge, परमानाज, प्रत्यक्षा, अनुमाना, उपमाना, शब्दा, अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, व्याप्ति, हेत्वाभास. यूनिट 7 है डाटा इंटरप्रिटेशन. इसमें सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट एंड मैपिंग ऑफ डाटा, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस. यूनिट 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट ICT. ICT, general abbreviations and terminology, basics of internet, intranet, email, audio and video conferencing, digital initiatives in higher education, ICT and governance. यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट.
development and environment, Millennium Development and Sustainable Development Goals, human and environment interaction, anthropogenic activities and their impacts on environment. Environmental issues, local, regional and global, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, waste. Solid, liquid, biomedical, hazards, electronic, climate change and its socio-economic and political dimensions, impacts of pollutants on human health, natural and energy resources, solar, wind, soil, hydro, geothermal, biomass, nuclear and forests, natural hazards and disasters, mitigation strategies. फिर है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यूनिट 10 है हायर एजुकेशन सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, evaluation of higher learning and research in post-independence India, Oriental, conventional and non-conventional learning programs in India, professional, technical and skill-based education, value education and environmental education, policies, governance and administration.